shivlings, a Yoni Pat, Hanuman idol, idols of Lord Krishna, Vishnu, Ganesh, Ram, Bhu, Varaha and Mahamukti Mandap inscriptions. This is all a part of the evidence that has been unearthed by the Archaeological Survey of India during its survey of the Gyanvapi complex. All of this evidence, not conjecture, but here in black and white. Evidence that is there in the ASI report submitted after a survey of the Gyanvapi complex. What you are seeing right now are pictures of the sculptures of Hindu deities that were found by the ASI during the survey that was undertaken on court orders. The report accessed by Times Now also clearly says that there was a mandir existing at the very spot where the current structure or the Gyanvapi mosque stand. The mandir was destroyed and on its ruins a mosque was built. Let's take you through the evidence in the Archaeological Survey of India report one by one. The first proof that we are getting to you, proof number one, a shivling. Seems like Mahadev has emerged from the ruins. Multiple such shivlings were found from within the Gyanvapi complex. Proof number two, Shri Ram inscribed in Devanagari on a marble stone. So two separate shilas have been found with Shri Ram inscribed on them. Proof number three, the idol of Hanuman. So you've got not just the shivling, not just the presence of Mahadev, but multiple Hindu idols which were found inside the Gyanvapi complex. Proof number four, an idol of Lord Krishna. It was damaged, its head had been damaged, but it is very obviously, and that is what has been stated in the ASI report, it is the headless idol of Lord Krishna. Its torso is intact. Proof number five, the idols of Vishnu and his avatars. Proof number six, the idol of Bhuvaraha, another avatar of Lord Vishnu. Proof number seven, Makar or crocodile. Remember, all of these iconographies are synonymous with the Hindu religion. You go to any temple and you will find such idols present over there. Proof number eight, Yonipat, an integral aspect of shivling. Remember, that is the basis of the dispute, that this is a temple of Mahadev. First we showed you the various cylindrical objects that have been found, which the ASI has identified as the shivling, and now the Yonipat onto which a shivling is inserted. Proof number nine, the idol of Ganesh. And finally, proof number 10, inscriptions found in the Mahamukti Mandap, which as per ancient texts reveal that this was the abode of Lord Shiv. All the evidence points at just one thing, one truth. You obviously will not find symbols of Sanatan Dharma and idols of Hindu gods like Brahma, Vishnu, Mahesh, Krishna inside a mosque. As per the 17th century inscriptions of the Mahamukti Mandap found on stone slabs, this evidence proves that there was an ancient Shiva temple at the spot where the mosque was later built. And this is the conclusion that has been reached not by anyone but the Archaeological Survey of India itself. As the Mandir proof in Gyanvapi becomes clear with these pictures on your screens establishing presence of Hindu deities, 55 pieces of evidence, not one, not 10, not a dozen, but 55 different pieces of evidence. The politics is still playing out. The simple question that we are asking right now is, why is there an effort to try and deny what is now present in the flesh? देखिए, चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी के पास कोई और मुद्दे तो बचे नहीं हैं, तो बीजेपी ये विश्व हिंदू परिषद आरएसएस पूरी तरह से मिलके पोलराइजेशन करना चाहते हैं, मैजोरिटोरियल अपीसमेंट पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, और अब वो लेके आ गए ज्ञानवापी का मुद्दा। अरे भाई, जब पूरा देश को लोग 1992 के एरा में लेके जाना चाहते हैं, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का कायदा बना हुआ है जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि जो भी मॉन्यूमेंट्स, जो भी रिलीजियस
स्ट्रक्चर जो 15 अगस्त 1947 के पहला है उसका आप नेचर और कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। देखिए, सर्वे है, सर्वे आया है, अब ये कोर्ट में केस आएगा, ये तो अदालत ने जो फैसला करे उसमें हम क्या कह सकते हैं। हिंदू पक्ष इसको सर एक बड़ी जीत बता रहा है। ना कोई जीत है इसमें, ना किसी की हार है। आजकल तो सब कुछ मुमकिन है। एक फैसला था और उस पर सरकार को भी और देश को भी कायम रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह की का विवाद अगर हम ढूंढेंगे तो हर जगह मिल जाएगा। ये बात सही है कि हो सकता है कि छेड़छाड़ किया गया हो मंदिर के साथ, हो सकता है मस्जिदों के साथ छेड़छाड़ हुआ हो, तो इसका तो कोई अंत नहीं होगा ना। All right. Let's take this across to Vinod Bansal, National Spokesperson of the Vishnu Hindu Parishad, Rohit Agrawal, Spokesperson of the RLD, and lawyer Sarfaraz Wani. But before we get into the politics, Vinod Bansal जी, सिर्फ ये तस्वीरें दिखा करके हम एक एक करके आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहले ये बताइए, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि महादेव का मंदिर है, तो यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति क्यों है? निश्चित रूप से सिर्फ हनुमान जी की मूर्ति नहीं, आपने जितनी भी मूर्तियां दिखाई एक के बाद एक जो बना, वो तो परतें दर परतें खुलती चली जा रही है। भगवान शंकर की जो भूमि है वो पवित्र मंदिर है, इस बात को लेकर के कोई दो राय अब बची नहीं है। माननीय न्यायालय में वो सारे सबूत जमा किए जा चुके हैं। आप देखिए कि कोई दुनिया का कोई मस्जिद बता दो जहां पर कोई भगवान शंकर की मूर्ति हो, भगवान कृष्ण की हो, भगवान विष्णु की हो, भगवान गणेश की हो, और ये भरा अवतार हो, ये सब चीजें कहां से आ जाएंगी आखिरकार, अगर मस्जिद कहते हो तो। वास्तविकता ये देखिए, ये तो मुझे लगता है कि ये बेईमानी बात है, ये दुर्भाग्य देश का बहुसंख्यक समुदाय और अपने आराध्य देव की जो पवित्र भूमि है उसकी मुक्ति के लिए कानून का सहारा ले रहा है। नहीं तो पद्मजा जी मुझे बताइए, दुनिया का कौन सा कंट्री है जहां का बहुसंख्यक समुदाय अपने आराध्य देव की पवित्र भूमि की मुक्ति के लिए और कानून का, कोर्ट का सहारा लेता हो? ये भारत का जो सहिष्णु हिंदू समाज है जो कि इस कानून के सहारे से चल रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि देखिए, जो तथ्य और सत्य सामने आए हैं वो सारा क्लियर कट एंड एक्सपोज्ड है। इसके बावजूद भी अगर कोई उसको हठपूर्वक और उसको मस्जिद कहता रहे, देखिए उस स्थान का नाम ही ज्ञानवापी है। Okay. वो ज्ञानवापी कोई संस्कृत में है क्या कहीं भी? Okay. मैं चैलेंज कर सकता that argument has now been left behind. Now we are looking at actual visual evidence, Sarfaraz Wani. Absolutely. What is the question now? What are we arguing about? There is a shivling, there is a statue of Lord Krishna, there is a yonipat. What are we arguing about even? बिल्कुल, अब इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। See, first of all, I want to reply to this person जो कह रहे थे कि कानून का सहारा लिया गया। जी भाई साहब, कानून का सहारा कहीं नहीं लिया गया। बाबरी मस्जिद को गिरा के फिर मसला कोर्ट में गया। Sir, we are talking about Gyanvapi right now. No. Gyanvapi and ASI report is here. Let's limit ourselves to Gyanvapi. What is the question now about Gyanvapi? Give me 2 minutes to explain my point. See, Padmaja, at a time when we are being outplayed by influence in the region has decreased. So let me complete this. At a time when Chinese economy is $20 trillion and ours is only $3 trillion, what are we fighting for? Mandir and Masjid. What was Places of Worship Act for? Tell me this. The act was to put a full stop to this fighting. Okay. We Let's set that aside for a second. I am just asking you, based on evidence, Places of Worship Act is a separate issue altogether. Places of Worship Act, hold on a second. Places of Worship, hold on a second. Places of Worship Act, first of all, is challenged in court. Second, hold on a second, sir, you are a lawyer, you should know better. Second, as far as this survey was concerned, the argument was given that Places of Worship Act stops this survey from taking place. The court decided that a survey cannot be stopped by quoting Places of Worship Act, which is why this survey has happened. Now I am asking you about the findings of the survey. The survey looking at the evidence, do you agree it's a mandir? The court, one thing, under the Evidence Act, the court is not bound by the surveys. It is for the court to decide whether to rely on the survey or not to rely on the survey. This is the first point. Second, let us not scratch the history. I am saying let us assume 500 years before there was a temple and now a masjid has been built. So does that anyway justify to
now destroy the masjid. Nobody is and leave destroying the a masjid, but minority let's not community- put the cart before the horse. I am asking you a simple yes or no question. I am showing you evidence. As a lawyer, you I am look at telling evidence, you the and court my legally, question, hold the on a court second, is the question not I'm asking you is this a temple or not? Padmaja, that's what I'm saying. Legally, we are not bound to rely by the survey. Under the Evidence Act, the court will securitize this report and then it will go either decide to go with this or not to go with Spoken this. like This a is the lawyer. legal So let me point ask on this. Rohit Agarwal. Rohit Agarwal, as a lay person, since you are not a lawyer, I am showing you Hanuman ji ki murti, idol of Lord Krishna, of Hanuman, and asking you, is this a temple or not? Padmaja, the sound of azan and a temple bell together can be a symbol of harmony and of brotherhood. Not really. This is no, like no. saying that your See, neighbor has actually- done kabza on your house, and the sound of your neighbor and you sitting in the same house is about harmony. It's not. Padmaja, let me It's complete. about kabza. Let me complete. But Padmaja, let me complete. You have forgot Mr. the Vinod British, now Bansal you are also going knows to the Mughals. truth, and Mr. Sarfaraz also knows the truth about the Gyanvapi. Even the word namaz is being derived from Sanskrit. So let's not go on that point. Even the DNA of Muslims are from Hindus only, and we should work on the brotherhood. We should not work on something like shedding a blood on a road. BJP is trying to take a political advantage of this issue. They want to run away from the real issues. That's why they want that the harmony and brotherhood should be compromised on the ground of Gyanvapi. Everybody knows the truth of a Gyanvapi. Either Padmaja, we don't need any ASI survey. You know? So So hold on a second. You are saying wait that for the RLD's position is you know that Gyanvapi is a temple. Padmaja, my stand is we know the truth of a Gyanvapi. What is we the know truth? even I the don't truth, know what you even- know as the nahi, truth of Gyanvapi. nahi, haan, I'm asking you, even sir, we what know- is the truth of Gyanvapi? I'm telling you, let me complete. Even we know that Mr. Sarfaraz ancestor can be a Shyamlal. It was the case that his ancestors were the Shyamlal. So forcefully Hindus were converted to Muslim. That does not mean today you will you want to scratch the harmony and peace of the country. ओके You विनोद should बंसल, तो understand कम the से fact. कम You should आरएलडी कह understand रही the है कि fact. हाँ ये मंदिर था, बट अब क्या हासिल होगा? ठीक है, अब आपकी आत्मा को शांति पहुंच गई है कि ये मंदिर था, अब छोड़ दीजिए. मतलब वहाँ भगवान शिव का एक भव्य मंदिर है. विनोद जी, वहां पे भगवान शिव का एक भव्य मंदिर है. अगर बगल में अजान भी सुन लोगे तो हमारे सनातन में कोई ऐसा नियम नहीं है. ओ भाई साहब, बगल में अजान की बात नहीं है. भगवान शंकर को दबा रखा है वजू खाने में. आप सोचिए, डर जाओ. ये दबाने वाली बात कहाँ है भाई? कैसी बात करो आप? हिंदू है और उसके बाद ऐसी बात करो, मुझे ज्ञान दे रहे हैं आप. ज्ञान बापी को मुझे ज्ञान दे रहे हैं. कमाल की बात है. आप एक पार्टी के प्रवक्ता हो गए तो इसका मतलब क्या? भगवान शंकर को भूल जाओगे? शिवलिंग आप मुझे बताइए, अजान से किसी को कोई दिक्कत हो रही है क्या? मैं कहता हूँ अजान से दिक्कत नहीं है. मेरे भोले शंकर को वजू खाने के अंदर क्यों दबा रखा है? ये तो आपको भी मांग करनी चाहिए ना. आप भली पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन कम से कम हिंदू तो है ना. आपका हिंदुत्व क्यों मर जाता है जब पार्टी की तरफ से बोलते हैं? तो आपको जब पार्टी की तरफ से बोलते हैं तो आपका हिंदुत्व क्यों मर जाता है? आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि जी इतने सारे एविडेंस मिले हैं, हाँ भगवान शंकर की पुण्य धरा को मुक्त किया जाए? आपको ही मांग करना चाहिए, आपकी पार्टी को मांग करना चाहिए. जरूरत थी क्या? मुस्लिम तुष्टिकरण में आप इतने अंधे हो जाओगे क्या आप तथ्यों को नकार दोगे? माननीय न्यायालय का निर्णय था और माननीय न्यायालय ने उसका सर्वे करवाया. उस सर्वे की जो फाइंडिंग है, क्या उस फाइंडिंग को नकार दोगे आप? आराधना कर रहे हो. दुनिया के कौन से मस्जिद के अंदर, की राजनीतिक लाभ कौन से मस्जिद के अंदर भगवान शंकर की मूर्ति होती है? इस इशू पे कौन से मस्जिद के अंदर भगवान कृष्ण की, भगवान गणेश की और इनकी सबकी मूर्ति होती है? और उसके बावजूद भी आप आंखों को पट्टी बांध करके और ओके, होल्ड ऑन अ सेकंड. विनोद बंसल जी, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मंदिर नहीं है. वो तो शुरू से मान रहे हैं कि मंदिर है, पर वो कह रहे हैं कि अभी आपसी वेमनेस से बढ़ा करके क्या फायदा मिल जाएगा? सिर्फ पॉलिटिकल फायदा. वेमनेस कहां बढ़ रहा है? इसमें वेमनेस कहां बढ़ रहा है? समझा ना, मैं कहता हूं ये तथ्यों के साथ छेड़छाड़ जो की गई थी उसको करेक्ट करने की बात कर रहे हैं ना. मेरे भोले शंकर के जो शिवलिंग है वो तो आज भी वजू खाने में कैद है ना. उसकी मुक्ति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मुझे रोहित अग्रवाल, फिर सरफराज की घर वापसी भी करा लो. फिर सरफराज की घर वापसी भी करा लो. वो भी तो कर सकते हैं कि सरफराज हिंदू है, मुझे उनकी घर वापसी भी करवा लो. अरे ज्ञान वापसी के बाद फिर आप कह देना सरफराज घर वापसी करो. मैं वेलकम करूंगा, लेकिन आप नहीं, थोड़ी होगा. अच्छा, तो कौन से सरफराज घर वापसी करा के बताओ करते हैं
भाई कौन से मंत्र से आप घर वापसी कराओगे सरफराज की, बता दो मुझे। Okay, Sarfaraz Wani, I think wants to come in. Now it is being proposed that after Gyanvapi, your ghar wapasi should happen. Sarfaraz Wani. We cannot undo what was done by the history. See, in history, we have been ruled by Mughals, we have been ruled by Muslims, we have been ruled by Britishers. अगर आपको सब गिराना है तो ताजमहल गिरा लो, रेड फोर्ट गिरा लो, बड़े बड़े जो मुगल्स ने बनाए हैं उनको गिरा लो। अगर आपको मुसलमानों से इतना है, इतनी आपत्ति है, जो मुसलमानों ने बनाया वो सब गिरा लो भाई साहब। अगर आपको यही सब करना है, इसी सब पे इलेक्शन जीत लो। मगर बात ये है, see, let's understand this. The act was brought in with this purpose only, to stop this Mandir Masjid debate. The act was brought in for this purpose. This is, I think, what we collectively believe in right now. What my brother has also said, that we should not now keep on this interfering. This is masjid, this is temple, this is church. I think this has to stop now. Okay. Stop politicizing all this. All right, See, you call BJP it political. can win 100 elections. A lot of people are saying we are completely going by the book as far as the law of the land is concerned. And now when the proof has come, to be told that ignore the proof in the larger interest, is that a denial of natural justice in the name of secularism? I'll leave that thought with you. Thanks, gentlemen, for joining me. I will see you next at 8 p.m. on India Upfront, where we're going to take a deeper look at where the Gyanvapi dispute stands right now in light of this fresh, conclusive ASI report. See you then.